Good morning, dear students. Welcome back in your computer class once again. Now, in this video, we are going to cover chapter number 2, which I left it just because of your reduced syllabus from the last year. So, this year actually nothing is going to be reduced from your syllabus. That's why we have to cover chapter number 2 and 5 as well. So, today I'm going to start your chapter number 2, which is what MS Access. Now, MS Access is what it is, a kind of software. Just like we use MS PowerPoint, we use MS Paint, Notepad, so many softwares we use. In the same way, we have MS Access application software also. Now, what we use in this and what is the purpose of using this MS Access software? Actually, in this software, we can create queries, forms, and reports. So one by one in the detailing we will study all these three topics. Moving on here to the introduction part. A query in MS Access produces selected records from a table that meet certain predefined conditions. That means MS Access में हम क्या करते हैं? That is a kind of software in which we create the information of some person. ठीक है, of some people we create the information. Like I can create the information or I can create a table about the students of class 8th. Now suppose I have created a table here, ठीक है, of suppose 8th A. So I can have roll number of the students, I can have name, address, age, and the last one we have here result. Now I'm going to enter the details here. Roll number 1, the name is Rakesh, address is this, age is 15, and the result is pass. In the same way, I have created the second roll number by the name Amit, then this is the address, age is 12, and fail. So in this way, what I'm doing, I'm creating the records, I'm creating the information of 7 students. ठीक है, whatever number of students you want to take, you can take it. That's not the issue. So I have created here a table of 7 students. Fine. Now query is what? Query produces the selected records from a table. That means ये क्या करता है? Selected records देता है. Now what is the meaning of record? Record means the information of any person. Information of any person. Like we have in this table the records of 7 students. This is, you can say, this is my record number 1. This is my record number 1. That means it is the information of one student. In the same way, I can say this is the record of student 2. So if I ask you how many records we have in this table, so you will answer that we have 7 records because we are creating the information of 7 students. So total how many records will be there? 7 records. So query क्या करता है? जितना हमारे पास टेबल होता है उसमें से क्या करता है? कुछ records को select करता है. And how it will select the records? On the basis of a predefined condition. That means we will specify a condition. Like suppose I have 50 students in 8th A class, right? In 8th A class, how many students are there? 50 students are there. Now I want the information of those students whose age is greater than suppose 13. I want the information of those students whose age is greater than 13. So this is my what? This is my condition. ये मेरी condition है क्या कि मुझे उन student की information चाहिए जिनकी age 13 से ज़्यादा है, right? So on the basis of the condition, I am applying some query, and on this query, I will get some particular records. Next, we have form. Form is used to add, modify, and remove the records in a table. अगर मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड्स ऐड करने. दैट मीन्स इफ़ आई वॉन्ट टू एड ऑन द इंफॉर्मेशन, add on some student. Suppose I am having only 50 students in my class and one more student took admission. New admission is there in my class. So I want to add on the information of that 51st student. ठीक है, so हम add भी कर सकते हैं. और if somebody leave the class, so I can delete the record of that student. Even I can modify also. Suppose the phone number of any student get changed, or you can say address got changed, so that means I can modify also. So with the help of form, what I will do, I will add, modify, or remove the records in a table. Next we have
What is report? Report is used to produce a table in the printed format. That means रिपोर्ट होता है, जैसे कि आपने देखा योर रिपोर्ट कार्ड. योर रिपोर्ट कार्ड इज व्हाट? दैट इज अ काइंड ऑफ प्रिंटेड फॉर्मेट. ठीक है, वॉट यू हैव डन थ्रू आउट द ईयर दैट इज समराइज्ड इनटू वन रिपोर्ट कार्ड. इन द सेम वे ऑल्सो वट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव, तो हम क्या करते हैं, उस पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है टेबल के अंदर, हम उसका क्या कर लेते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, रिपोर्ट रेडी कर लेते हैं. सो रिपोर्ट इज बेसिकली यू कैन से यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट टेबल विद द हेल्प ऑफ अ रिपोर्ट. I hope all the three things are clear. Next, in the detailing, we will study first is query. So query is used to apply a filter in the table's data to select the records from a big collection of records that meet certain conditions. Already discussed. In this manner, only those records are produced that conform to certain conditions that are applied. इट मीन्स क्वेरी से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर करते हैं टेबल के अंदर. फिल्टर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई एम गेटिंग सपोज 50 स्टूडेंट्स आर देयर, सो आई जस्ट वॉन्ट 10 स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन और 20 स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स वॉट? आई जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और वी कैन से वी आर एक्चुअली अप्लाइंग द filter process. So this is the main purpose of using query. Then next we have here how to create the query. So query may be based on other queries or a set of tables. Query हम किस पे लगाते हैं? Tables पे लगाते हैं. ठीक है. So what is the first step? You will open a database. Now database क्या होता है? Database is the collection of data. Database is the collection of data. So you will open that database. That means आप जो MS एक्सेस है उसको ओपन करोगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे. उसके बाद में क्लिक ऑन क्रिएट टैब ऑफ द रिबन. नाउ वेयर इज द क्रिएट टैब? दिस वन. Step number 2 is click on query design on the other group. Where is query design? Here we have query design. Click on this query design. Now as soon as I will click on this query design, I will see that a show table dialog box will appear. जैसे ही मैं query design पे click करूँगी, show table आ जाएगा. Now where is the show table? Look at this. And the name of this is show table. ठीक है. Now step number 3 is choose a table where query has to be placed. आपको जो query है वो किस पर लगानी है, जो condition है आपको, where you want to apply that condition or query. So select that table on which you want to apply. So I will select the table. Suppose the name of the table is table 1. If suppose my table name is 8th class, so I can select 8th or 8th A or 8th ABC, whatever. ठीक है. So whatever name is there, I will select the name of that table. Then click on add. Where is the add option? This one. The chosen table is added in the query window. तो जैसे ही आप add पे click करोगे तो आपकी टेबल का नेम डिस्प्ले हो जाएगा शो टेबल के अंदर. Next is click on close. Here we have close button. So this is how I will specify that on which table I want to apply the query. Next we have parts of the query window. Now query window is divided into two panes. टू पेन्स मतलब टू पार्ट्स. क्वेरी विंडो किस में डिवाइडेड होती है? टू पार्ट्स में डिवाइड होती है. टेबल चूजन फॉर द क्वेरी आर शोन इन द टॉप पेन. दैट मीन्स आपका एक टॉप पेन होता है और एक कैसा होता है? लोअर पेन. दिस इज वी हैव टॉप पेन एंड हेयर वी हैव लोअर पेन. दिस इज माई टॉप पेन. ये होता है टॉप पेन. ठीक है, जहाँ पे आपकी टेबल की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है. एंड नीचे के साइड में जो होता है दैट मीन्स जो लोअर पेन होता है दैट शोज द डिज़ाइन ग्रिड. दिस वन, दिस इज़ नोन एज माई लोअर पेन और द लोअर पार्ट. यहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है? डिज़ाइन ग्रिड. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज एक्चुअली डिज़ाइन ग्रिड. ठीक है. सो एक्चुअली क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पेन्स? टू पेन्स, दैट इज टॉप पेन एंड lower pane. What is the use of top pane? It shows the name of the table, right? And lower pane shows the design grid. Okay. Now here we have the design grid. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है that is not properly visible here in this diagram. That's why they have shown it in a different way. So what options we have in the design grid? First we have field. Fields from the selected table are shown in the field row. फील्ड रो यानी कि क्या होता है? आपके पास जो डिज़ाइन ग्रिड होती है ना, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा फील्ड. देन यू विल गेट टेबल, देन यू विल गेट शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया एंड और. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव वन रो ऑल्सो लाइक दिस. वी हैव द रो फॉर एवरी कैटेगरी
we will have the row like this, right? So this is known as field row, this is known as table row, this is short row, this one show row, this one criteria, and the last one is or row. So इनको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। सो पहली वाला जो है आपका ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज फील्ड रो। अब देखो वो कह रहा है कि फील्ड रो के अंदर क्या डिस्प्ले होता है, फील्ड्स फ्रॉम द सिलेक्टेड टेबल। जिस टेबल पे आपको क्वेरी अप्लाई करनी है उनके फील्ड्स के नेम डिस्प्ले होते हैं। नाउ व्हाट इज फील्ड नेम, फील्ड नेम मीन्स द हेडिंग ऑफ द कॉलम, द हेडिंग ऑफ द कॉलम इज नोन एज फील्ड। जैसे कि रोल नंबर इज अ फील्ड, नेम, एड्रेस, एज, रिजल्ट, what are these are the names of field, right? तो fields का मतलब क्या हो गया, हेडिंग जो होते हैं हमारा किसका, कॉलम का, दैट इज नोन एज फील्ड। नेक्स्ट वी हैव टेबल। टेबल रो के अंदर क्या डिस्प्ले होता है, नेम ऑफ द टेबल, टेबल का क्या नेम था, टेबल वन, तो क्या डिस्प्ले होगा टेबल रो में, टेबल वन। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट, डेटा इज फिल्टर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन द शॉर्ट रो। डेटा आपको किस वे में चाहिए, दैट मीन्स यू वांट इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए इन्फॉर्मेशन। सो दैट डिपेंड्स ऑन द शॉर्ट रो। नेक्स्ट वी हैव शो, when the query is run a particular field that will be visible is displayed by a check mark show in the show row। इसका मतलब ये है कि when you will apply the query on the table, आपने कोई क्वेरी अप्लाई करी टेबल पे, तो कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जो आपको अपनी टेबल में चाहिए। जैसे कि सपोज करो आई हैव 5 फील्ड्स इन द टेबल, लुक एट दिस डायग्राम, here I have 1 2 3 4 5 fields, right? But I just want कि after the query, जब हमारे पास क्वेरी लगाने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड सपोज रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, मुझे क्या चाहिए, नेम एंड रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ये दोनों मैं क्या कर सकती हूँ, सेलेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ बॉक्स। यहाँ पे क्या होता है, हर एक फील्ड के बाद एक इस तरीके से बॉक्स बना हुआ आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको टिक कर देते हैं। अगर टिक किया दैट मीन्स दैट विल बी विजिबल इन माई आंसर, और अगर अनटिक रहने दिया या दैट मीन्स अगर उसको सिंपली ब्लैंक लीव कर दोगे देन दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर फील्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी विजिबल इन द फाइनल आंसर। तो मुझे नेम चाहिए और रिजल्ट चाहिए, तो मैं नेम पे भी टिक करूँगी और रिजल्ट पे भी इस तरीके से टिक कर देंगे, तो क्या होगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें नेम और रिजल्ट जो होगा दैट विल ओनली गेट डिस्प्लेड, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल नॉट गेट डिस्प्लेड टू द user। This is the use of show। Next we have criteria, the condition on the basis of which the records will be filtered specified in the criteria row। यानी कि criteria के रो के अंदर हम क्या लिखते हैं, condition, ठीक है। The last one we have or का मतलब multiple conditions are specified using the or row। यानी कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो हम उसको कैसे करेंगे, और रो के अंदर। जैसे कि I will show you with the help of an example here। Let us take one example। See, now we have table, ठीक है। I want the information of those student whose age is greater than 13। हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई थी, that I already shown you before, ठीक है। Now I want the information of those students only whose age is greater than 13। So you can see here in the design grid we are having field row, field, table, short, show, criteria and or, ठीक है। Now here we have the names of the columns, roll number, name, age। in the same way you can have address, then you can have your result, whatever you want, ठीक है, you can select it from here। now all these fields are the part of which table, what is the name of the table, table 1। so write the name of the table as table 1, everywhere you will write here table 1, right। next we have short। शॉर्ट के अंदर आप क्या लिखते हो, वेदर यू वांट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देखो शॉर्ट में मैंने क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब जो रोल नंबर है, आपने रोल नंबर पे शॉर्टिंग अप्लाई की है, ठीक है। तो व्हेन द इंफॉर्मेशन विल कम यू विल सी कि जो रोल नंबर है वो सब कैसे आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। इज दैट क्लियर, रोल नंबर विल कम इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इफ़ यू विल राइट डिसेंडिंग है सो वो डिसेंडिंग में देगा। ऐसे अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली शॉर्टिंग चाहिए तो यू विल नॉट राइट असेंडिंग हियर, यू विल राइट असेंडिंग नाउ इन दिस कॉलम।
अगर आपको ए से लेकर लाइक ए बी सी से लेकर जेड तक चाहिए और रिवर्स ऑर्डर में चाहिए लाइक जेड वाई एक्स अप टू ए, सो यू विल राइट डिसेंडिंग. So it depends on which you are applying the sorting. Next we have criteria. Criteria means the condition. Now my condition is what? Age is greater than 13. So what I will write? See, this is my criteria row. In this particular column age, ये यहाँ पे लगानी है. age column में यहाँ पे लिख दो greater than 13. इसका मतलब वेयर एवर आई विल गेट द एज ग्रेटर देन 13 आई विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज स्टूडेंट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव और के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं. जैसे एज इज़ ग्रेटर देन 13 एंड सपोज रोल नंबर इज़ 10. तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है सो यू विल यूज़ और, कि आइदर दिस और दिस. वन मोर वी हैव शो. शो के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपको अपने आंसर में चाहिए उसके लिए आप टिक पुट कर दोगे और जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दोगे, अनटिक कर दोगे. अगर आपको नेम नहीं चाहिए सपोज इन योर फाइनल आंसर, सो यू जस्ट लीव इट, यू डोंट राइट एनीथिंग हियर. सो वट एवर कॉलम्स, वट एवर fields you want in the final answer, you just put a tick sign like this. Okay, so this is how you will make a proper you can say you will design it, you will design the query. After that next we have fourth step. अब आपने ये सब कर दिया है. नाउ लास्ट स्टेप होता है क्लिक ऑन रन ऑन द रिजल्ट ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब ऑफ द रिबन टू सी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी दैट इज़ डिस्प्लेड इन द डेटा शीट व्यू. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना है, फाइनली आंसर डिस्प्ले कराना है कि अब मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा. ठीक है, यू जस्ट वॉन्ट टू सी योर फाइनल आंसर. सो वॉट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन रन ऑप्शन. हेयर वी हैव माई रन ऑप्शन. रन ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और रन पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी हेयर you will get the answer in this way: roll number, name and age. If name was there so only name will come. ठीक है. and see roll numbers are coming in ascending order. पहले 1 स्टूडेंट की आया और फिर 5 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आई एंड यू गॉट द नेम ऑफ दैट एंड द एज. अब आप देख रहे हो कि जिसकी एज 13 से ग्रेटर है ओनली दोज स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन आई गॉट इट. रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन will not get displayed to the user. So this is how you will apply the query on the table. Next we have multiple criteria may be applied on a table. मल्टीपल क्राइटेरिया भी हम टेबल पे लगा सकते हैं. जैसे कि आपके पास क्या होता है, वी आर हैविंग 2 कंडीशंस एंड और. ठीक है. सो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि सपोज वी आर हैविंग 2 कंडीशन C1 एंड C2. हाँ, अगर आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है सो यू विल यूज़ एंड. और अगर आपको ऐसा चाहिए कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आप यूज़ करोगे और. सो बेसिकली एंड कंडीशन इज अप्लाइड व्हेन वी हैव टू एंटर 2 क्राइटेरिया ऑन द सेम लाइन. यानी कि अगर आपको जैसे लिखना है कि एज इज़ ग्रेटर देन 13 एंड रोल नंबर इज सपोज ग्रेटर देन 10, तो क्राइटेरिया के अंदर ही लिखोगे ग्रेटर देन 10 इन केस ऑफ रोल नंबर यहाँ पे. और एज कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 13. तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है और आप चाहते हो कि सारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आप सेम लाइन के अंदर लिखोगे, दैट मीन्स क्राइटेरिया रो के अंदर लिखोगे. ठीक है. और अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप कहाँ लिखोगे, और रो के अंदर. जैसे कि एज इज़ ग्रेटर देन 13, या तो मुझे वो पर्सन चाहिए जिसकी एज 13 से ग्रेटर है, या फिर मुझे उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका नेम अमित है. सो आई कैन राइट हेयर इक्वल, और रो के अंदर आई कैन राइट हेयर इक्वल टू अमित. सो इन दिस केस क्या होगा, मुझे उन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जिसका नेम अमित है और उनकी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी एज ग्रेटर देन 13 है. सो एंड मेनली यूज्ड व्हेन वी वांट टू एंड और, बोथ वी यूज व्हेन वी वांट टू अप्लाई मल्टीपल कंडीशंस. बट द थिंग इज दैट एंड जो होता है उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट और कंडीशन चॉइस देता है हमको कि कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. दैट इज़ द यूज ऑफ एंड और. Next we have access forms. As I already told you what is the use of form. Form जो होते हैं that are mainly used to add, to delete or to modify the records in a table. किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है तो फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. देन हेयर वी हैव हाउ टू क्रिएट द फॉर्म. सो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन क्रिएट टैब ऑन द रिबन. सो हेयर वी हैव क्रिएट टैब.
देन स्टेप नंबर 2 इज़ क्लिक फॉर्म इन द फॉर्म्स ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप यहाँ पे देखो, ये आपके पास ऑप्शन है फॉर्म इन द फॉर्म्स ग्रुप। जैसे आप इस फॉर्म पे क्लिक करोगे यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स एंड हेयर यू कैन सी द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट की थी, लाइक वी हैव रोल नंबर 1, नेम इज़ राकेश, एड्रेस इज दिस, एज इज सपोज 13, रिजल्ट इज पास। इन द सेम वे यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 15 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, देन वी हैव हेयर दिस इज नोन एज नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यू कैन मूव ऑन इन टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। सो मेनली नेविगेशन बार इज़ यूज टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑन अ फॉर्म। अगर मेरे पास स्टूडेंट 1 है तो मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आई विल यूज़ द नेविगेशन बार। यहाँ पे आप बुक में देखोगे दैट विल बिकम मोर क्लियर। यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं हमारे पास इस तरीके से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसको फॉरवर्ड प्ले कर सकते हैं और बैकवर्ड प्ले कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव 3 व्यूज़ आर अवेलेबल इन एक्सेस टू व्यू अ फॉर्म। यानी कि अगर मुझे फॉर्म देखना है तो फॉर्म देखने के लिए हमारे पास 3 व्यूज़ होते हैं, दैट इज़ फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू। नाउ फॉर्म व्यू इज़ व्हाट, इट इज़ यूज टू टाइप और मॉडिफाई द डेटा। ठीक है, आपको यानी कि डेटा को चेंज करना है तो आप किस में करते हो, फॉर्म व्यू के अंदर मॉडिफाई करने के लिए। देन वी हैव डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू जो होता है दैट इज़ यूज टू मॉडिफाई द डिज़ाइन ऑफ अ फॉर्म। ठीक है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड डिज़ाइन? फॉर्म इज़ एक्चुअली यूज टू चेंज द डेटा, to change or to modify the data, but design view is mainly used to update the design of the form, that means to modify the size design. ठीक है, देन वी हैव लेआउट व्यू। लेआउट व्यू क्या होता है, इज़ यूज टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्म। आपने किस तरीके का बनाया है वो फॉर्म, उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट, उसकी स्टाइलिंग, उसका टेक्स्ट, एवरीथिंग यू कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ दिस लेआउट व्यू। ठीक है, सो हाउ विल यू चेंज द लेआउट? वी हैव अ फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब होता है जहाँ से आप अपने फॉर्म का लेआउट चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन दैट यू विल गेट अ ऑप्शन ऑटो फॉर्मेट गैलरी। ऑटो फॉर्मेट गैलरी होती है फॉर्मेट टैब के अंदर, उस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हो फॉर्म की। जस्ट लाइक हियर वी हैव, दिस इज़ माई ऑटो फॉर्मेट गैलरी। अब आप देख रहे हो, आप इस आपके पास इतने स्टाइलिंग्स हैं, यू कैन हैव मल्टीपल स्टाइलिंग्स, यू कैन ट्राई इन योर कंप्यूटर, इन योर लैपटॉप इफ़ यू हैव एट योर होम। सो यू कैन सी ओवर देयर कि जैसे आप यहाँ पे फॉर्म की स्टाइलिंग्स चेकआउट करोगे, सो वेयर एवर यू विल प्लेस योर कर्सर फ्रॉम द माउस, यू कैन सी द चेंजेस एट द बैक साइड। अगर आप जो भी स्टाइलिंग सेलेक्ट करोगे वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो यू कैन सी, अभी तक आपका जो फॉर्म था वो कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा था इन द ब्लैक कलर। नाउ with the help of auto format gallery it is changed to this orange color. So this is how you can change the styling of it or the layout of the form. Then the last topic of this chapter, which is what, report. As I already told you about the report also, that report is used to present the data in a printed format. ठीक है, then the next thing arises, how to create a report. कैसे create करते हैं? Then we have here create tab. Click on create tab on the ribbon. Create tab कहाँ पर है? Here we have create tab. देन क्लिक रिपोर्ट फ्रॉम द रिपोर्ट ग्रुप। हियर वी हैव द ऑप्शन रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो रिपोर्ट पे क्लिक करोगे एंड देन रिपोर्ट इज़ क्रिएटेड कंटेनिंग ऑल द फील्ड्स ऑफ द सिलेक्टेड टेबल ऑन द रिपोर्ट। तो आप देखो यहाँ पे, आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर्म में क्या हो रहा था, फॉर्म में सिर्फ एक टाइम पे यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन ऑफ वन स्टूडेंट ओनली। ठीक है, बट रिकॉर्ड के रिपोर्ट में क्या होता है आपका, यू कैन सी द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन स्क्रॉल बार यू कैन जस्ट मूव ऑन। ठीक है, देन 4 views are available in which a report is displayed in MS Access, and these are report view, print view, layout view and design view. That means अगर आपको रिपोर्ट देखनी है अपनी तो रिपोर्ट आप 4 व्यूज़ में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देन अगेन ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन होता है लेआउट चेंज करने के लिए। तो ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन इन द लेआउट व्यू इज़ यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। जस्ट लाइक प्रीवियसली हमने क्या किया था, वी हैव चेंज द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म
In the same way, we will change the format of a report also. ठीक है? That chapter was very easy. We have completed our chapter description. Now in the next video we will discuss the question answers and exercise. And one more thing is there, that complete your workbook also. In the online classes I have completed total 12 practicals. So those total 12 practicals should be completed in your workbook, because you will get the practical marks on the basis of that also. If practical is going to be conducted in the school itself, so practical plus workbook. Otherwise अगर practical नहीं होते हैं in any case, then we will divide the marks. But the thing is that you should have the proper workbook also. And in the class I announced that you can wait up to 15th of August. 15th of August you can wait for the workbook. That means if it is available on the shop or not. And if you are not getting the workbook from the shop, then you can do one thing, you can take the photocopy of it. यू कैन टेक अ एम्प्टी वर्कबुक, किसी से एक वर्कबुक लेना जिस पे कुछ वर्क ना हो रखा हो, एंड देन you can get the photocopy. Otherwise you can have one more option, you can take a simple science copy. Science copy होती है ना, on the left side we have a blank page, on the right side we have the lining paper. तो वो जो साइंस वाली कॉपी आती है, you can take that one also. and उस पर आप अपने सारे जितने भी, कितने प्रैक्टिकल्स बताए मैंने, टोटल 12 practicals, right? So all those 12 practicals I just wanted, right? And the last day to submit is 30 of August. 30 of August is the final date. Before that I just want the practicals of each and every student. After that if you are going to submit, I will accept it, but up to your half yearly exam, that means up to 10th August only. But in that case your marks will get reduced, and that how much marks I am going to reduce, it depends on me, right? So this is the information about your practical workbook. So everyone complete your workbook, and still you, if you have any doubt, you can join the online class and you can clarify your doubt. So here I'm going to end the video. That's all for today. Thank you.